Yes, so yesterday we have seen about valence electron and valency. Yesterday we have seen about valence electron and valency. Today we will see about the what effect the valence electron gives on the element. Okay, the effect of valence electron if an element loses an electron or if an element gains an electron. So what happens to that element? You have to understand the thing that if an atom or if an element's atom just have the same number of electrons and protons, because protons तो same रहेंगे but electrons lose या gain कर सकता है कोई भी atom. तो if that atom is not even gaining an electron or losing an electron, that atom or that element is in ground state, or you can say that atom is in neutral state right now. Okay, so if in case I talk about sodium, so what is the atomic number for sodium? Sodium's atomic number is Na. And for sodium, atomic number is 11. If we talk about the electron configuration EC of sodium, that is 2, 8 and 1. So 2, 8, 1 is the electron configuration of EC. And as I have told you yesterday, to find the valency electron for, so let's draw the structure, atomic structure, atom structure for sodium. So in the first shell there are 2, 1, 2. In the second shell, this is K, this is L, and this is M. So for K, sodium have 1, 2. For sodium, for second shell L. Okay, so L is having 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 electrons. Now I'll draw the M shell. Okay, so the M shell for sodium, sorry. So the M shell for sodium. So M shell, just 1 electron. Okay, so sodium, if you count the number of electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So sodium is having 11 electrons, total 11 electrons. At this stage, when sodium is having and A is having 11 electrons and 11 protons in the nucleus. We know that a neutral atom have number of protons and neutrons equal number of protons and neutrons, because this plus is showing the number of protons. We have 11 number of protons in a neutral sodium atom. तो हमेशा सोडियम का जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या इक्वल होगी. सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल होगी. The measurement or the number of protons and electrons in a neutral atom will be equal. So right now 11 electrons have sodium के पास, and as we know that it is a single electron. So सोडियम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है, द लास्ट ऑक्टेट लास्ट शेल है इसमें, लास्ट शेल M है, और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो इसको क्या चाहिए? सोडियम नीड्स एन इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होंगे? He needs 7 electrons to complete the octet, as we have studied. The valency of sodium अगर हम find out करें, तो how we can find out? I have told you that 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 number of valence electron की जो नंबर है, अगर 1 हो, 2 हो या 3 हो, मतलब लास्ट शेल में अगर एक valence electron हो, 2 हो या 3 हो, तो how we find out the valency? So the number of valence electron, number of valence electron will be equal to valency. Okay, will be equal to valency. So यही इसकी valency होगी. So sodium की valency 1, मतलब ये एक दे सकता है, because it's easy for sodium to lose an electron rather than to take 7 electrons, 7 more electrons from other somewhere else. क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन तो उसके पास 11 ही है ना, अगर वो 7 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस अगर हम कर दें तो 8 and 16, 17, 18 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसके पास, और इसके पास अभी प्रोटॉन्स तो 11 ही है, तो बैलेंस नहीं रहेगा, है ना.
अनस्टेबल हो जाएगा सोडियम, तो दैट इज द इशू। सोडियम क्या करेगा, सोडियम विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, सोडियम विल लूज एन इलेक्ट्रॉन। और जब हमको पता है, एज वी नो दैट, चार्ज की बात करें तो अगर कोई भी चीज अगर नेगेटिव चार्ज को छोड़ती है तो ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर अभी भी सोडियम का 11 ही है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर फॉर सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो अभी भी 11 है, बट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, ये लूज कर दिया उसने, है ना, ये लूज कर दिया, तो अब उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ओनली 2 and 8 मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, तो अब टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो दैट इज दैट इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फिगरेशन। सो Ec इसका होगा 2 and 8, ही लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे उसने लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन तो सोडियम विल चेंज इनटू सोडियम आयन, सोडियम कैटायन। Okay, so you can assume, you can by this you can say that cations are the cations are the charged particle of that element जिसमें positive charge है and they have used 1 electron, they have used 1 electron. Okay, so cations की बात हम कर रहे हैं। So the number of, when an atom loses electron, the number of protons become less than the number of electrons become less than that of the number of protons. तो यहाँ पर ये हुआ है कि sodium has lost an electron and the number of proton increase हो गया, क्योंकि proton तो still we have 11 only, but electrons कितने हो गया, 10 हो गए। तो इसके कारण because of this reason the sodium became cation, चार्ज हो गया सोडियम के साथ, पॉजिटिव चार्ज, अभी न्यूट्रल था, बट अब क्या हो गया, पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो we can say that sodium became positive, cation बन गया। That is the reason sodium is a cation and a positive is a cation, और उसका जो वैलेंसी that is 2 8, और now उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। Now you can say that the K and L shell, the K and L shell of sodium is complete. The K and L shell of sodium is complete. Sodium ions, sorry, sodium ions K and L shell is complete. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालिए, चलिए सोडियम आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालिए। सो इफ आई टॉक अबाउट सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स से शुरू करते हैं। सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स सोडियम आयन है, 11। ओके, 11 ही है, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग दैट द नंबर ऑफ व्हाट इज एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो हमने प्रोटॉन्स तो यूज किए नहीं है ना, तो प्रोटॉन्स 11 ही रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। If we talk about electrons, so electrons we have used 1 electron. So now in sodium ion, how many electrons are there left? They are 10. And if I say that, please give me the number of a neutron. Please give me the number of neutrons. How we can calculate number of neutrons? The number of neutrons we can calculate by a formula, that is neutron equals to atomic mass minus atomic number, the number of proton. So atomic mass minus atomic number. Okay, that is the number of, so we get that through this formula you can find out the number of neutrons in this sodium positive ion. Okay, and as we know that the mass of sodium is 23, that will be given in question. If someone asks you a question like this, that find out the neutrons of some element, so he will provide you the atomic mass. If in case you are not, you don't have the remembrance, you don't learn the mass, still he will provide you the mass and he
atomic number. So the mass of neutron, so the mass of one atom of sodium is 23. It will be minus by the number of protons or atomic number. Okay. So atomic number 11, 23 is the atomic mass. So 23 minus 11. 23 minus 11. So it will give you the number of neutron. Neutron will denoted by small n. So how many neutrons? 2 and 1. So we have 12 neutrons present in the nucleus of a sodium atom. So sodium have neutron 12. Okay, so a sodium ion have 11 protons, 10 neutrons and 10 electrons and 12 neutrons. 11 protons, 10 electrons, 12 neutrons. Okay, so by this this is the formula for finding the neutrons. This is how you can go through with the electrons and protons. We know that protons will be minus the only. So the protons and that will remain the same. And the atomic number is equals to the number of protons. So जो atomic number होगा, we know that atomic number of sodium is 11, and sodium ion का atomic number 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 is the number of protons. Proton lose नहीं करता है कोई भी atom. He loses electron. Electron ही outermost shell of the nucleus की इसको lose कैसे करेगा? So electrons can be lost by an atom. So in this by this you can find out the number of neutrons, protons and electrons also in an atom. Give an example. Okay, so this is an example for cation. Now if I say what about anion? Anion is a negative charge. So negative charge के लिए हमारे पास example है chlorine. Chlorine का जो atomic number है that is 17. Okay, so यहीं से हम will manage from here only. So yes. So for chlorine, if I talk about, so chlorine and the atomic number for chlorine is 17. This number of protons in chlorine is 17. Okay. Now, what is the EC of chlorine? So 2, 8, 7. Okay. This will be the electronic configuration for chlorine. 2, 8, 7. 7 will be the number of electrons present in the outermost shell of chlorine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, so count करें number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, so 17 number of electrons present in neutral atom of chlorine. So number of in a neutral atom, किसी भी element का neutral atom में number of electrons और protons equal होते हैं. But अगर मैं charge cation या anion की बात करूँ तो number of protons is not equal to number of electrons, because charge कब होगा जब वो electrons को या तो lose करेगा या gain करेगा. So in chlorine it will gain an electron because 7 is the valency of chlorine. अब वो कैसे निकाला? This was for the formula. This was for the number of valence electron 1, 2 या 3 हो. अगर आखिरी शेल में 1, 2 या 3 valence electron हो तब ये होता है. If in case we have 4 to 7 electrons in the valence shell, so what will be the formula? The formula for finding the valency is 8 minus number of valence electrons. Number of valence electrons will give you valency. Okay, will give you valency. So if we talk about chlorine, so how we will find out? 8 minus 7. 8 minus 7. That is 1. 1 is the valency of chlorine. But chlorine will not. So 1 is the valency means he is taking 1 electron to complete the octet. 1 is the valency means chlorine is taking 1 electron to complete the octet. यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा क्लोरीन में तो क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और वो स्टेबल हो जाएगा. तो
takes an electron from somebody else. So जब electron ले रहा है, right now उसका configuration है 287. After that, chlorine का configuration क्या हो जाएगा? 288. Okay. So यहाँ पर electron पड़ा है. अब मैंने कहा था आपको अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब वो केटायन बन जाता है. अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायन बन जाता है, एनायन. So a single negative charge. So chlorines anion have single negative charge and number of electrons will be 288. Means we have increased one electron. Protons तो same रहेंगे. We have not gained or lost any proton. Proton कभी भी lose या gain नहीं करता कोई atom. What he lose? Number of electron. Or what he gains? Number of electron. So chlorine had gained one electron. So the number of electrons of chlorine anion is electrons कितने हो जाएंगे इसके पास? 18 electrons for chlorine anion. Chlorine anion के लिए number of electrons कितने हो जाएंगे? 18. Okay. So like this. Okay. अब मुझे find out करना है number of neutrons. तो मैं कैसे find out करूँगा? I will put the value of atomic mass and atomic number for chlorine and I will find the number of neutrons over there. So atomic mass of chlorine is 35. Atomic mass of chlorine is 35 and atomic number of chlorine is 17. So when we minus this value, so we will get 18 number of neutrons in the nucleus of chlorine anion. So 18 neutrons. Okay, 17 proton, electron 18 and neutron 18. Okay, so this is the anion. For we are talking about the anion. So anion, negative charge anions which gain the electron. These are the example for anion. So this is the topic which we have covered about the anion and cation जो कि फॉर्म होते हैं, है ना? ऐसे ही चार्ज लगता है, ठीक है, किसी भी एटम के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, डिपेंडिंग ऑन ही इज टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन और ही इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन. Depends on that. If an atom, if an element lose an electron, then it became positive. And if he gains an electron, it becomes negative. That depends on the valency of that atom or the element. Because it's easy to lose 1, 2 or 3 rather than gaining much bigger number of electrons. So here it was easy to take an electron because 7 lose karna is quite difficult for an atom. वो unbalanced हो जाएगा. So he will take 1 electron and manage. So octet complete हो गया और chlorine negative stable हो गया, है ना? तो यहाँ पर neutral नहीं रहा chlorine charge anion बन गया है और सोडियम के लिए वो बन गया था charge cation. Okay, तो positive charge cation and negative charge anion chlorine. So this is the example for cation and anion elements. Okay. Yes, so if we talk about this example, this is an example of a question. This is an example how you can find out the number of electrons, protons, and neutrons. So first, try to understand the question which is written over here. The question says that what you have to find? The atomic number of aluminium is 13. The question the atomic number of aluminium is given 13, and the mass number is 27. Atomic number of aluminium is 13 and the mass number is 27. Calculate number of electrons, protons and neutrons in the ion form represent the ion. What will be the valency? So what you have to calculate? You have to calculate the number of electrons, protons and neutrons in the ion. Okay, in the ion of aluminium. Neutral atom में नहीं निकालना. You have to find out the number of electrons, protons and neutrons in the ion of aluminium. Represent the ion because we have to represent the ion. What is the ion is cation or anion? Okay, you have to show that also. And what will be its valency? You have to show the valency also. So how we will calculate this or how we will solve this? So first we know that what is the atomic number. Okay, so we know that atomic number of aluminium given here. So what is given? Every time when you solve a question, first write the given things. In chemistry, if you are solving a question, first write the given things. What is given in the question, and then go through with the answer. So
given is you have the 13 number of electrons is given. So if the atomic number equals to 13. So what will be the EC? Electronic configuration will be 2, 8, 3. So as we know that for 1, 2 and 3, if an atom have 1, 2 or 3 valence electron in the outermost shell, the valency will be equal to that. So aluminum will lose 3 electrons and will form an cation. So aluminum will lose 3 electron, 3 plus हो जाएगा, and then the EC will be electronic configuration will be 2 and 8. So अब मैं number of electrons, protons and neutrons लिख दूँगा for aluminum because आपको पता चल गया कि उसने 3 electrons को lose कर दिया, तो कर दिया है एक cation, aluminum का cation. तो number of electrons कितने होंगे यहाँ पर? 10. Number of protons equals to कितना है number of proton तो 13 ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि number of proton is equals to atomic number and हमको बताया कि कोई भी एटम हमेशा उसके number of protons को lose नहीं करता. ठीक है, तो number of protons तो same ही रहेंगे. What will be number of neutrons? Neutrons की संख्या कितनी हो जाएगी? So what is the formula? Formula is atomic mass minus the atomic number. So atomic mass minus number. So atomic mass is 27 minus atomic number is 13. So 27 minus 13. So what will be the number of neutrons? So 27 minus 13, the number of neutrons will be 14. The number of neutrons will be 14 neutrons. So n will be 14. So number of neutrons will be 14. So this is the thing. So we have given the valency. What will be the valency? Is the ion. The valency will be 2 and 8 for aluminum 3 plus ion cation. This is the cation. Cation of aluminum. The 2 and 8. So 3 will be the valency. And the atomic number is 30. So number of electrons, protons and neutrons. ये सब कर दिया हमने. बता दिया aluminum ion के लिए number of electrons are 10, protons are 30 and neutrons will be 14. Okay, so by this you can solve, and this type of example will come in examination. This type of examples will come.